Hi, in today's video we're going to be seeing how to lie down on a bed and do full body yoga and exercise. आज का वीडियो में हम कैसे बेड में लेटे लेटे पूरा शरीर के लिए व्यायाम करेंगे उसके बारे में देखेंगे. एंड दिस रूटीन कैन ऑल्सो हेल्प यू टू डिटॉक्स द होल बॉडी. ये पूरा शरीर को भी डिटॉक्स करने में मदद करेगी. बट बिफोर दैट मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. उसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाएं. शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. लेट्स लाई डाउन ऑन आवर बैक. लेटेंगे. चाहिए तो छोटा सा पिलो यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू वांट यू कैन यूज अ स्मॉल पिलो. मेक श्योर योर शोल्डर इज लिटिल ऑन द पिलो. लेट्स बिगिन विथ बॉडी शेकिंग. लिफ्ट योर लेग्स अप, टेक योर हैंड्स अप एंड शेक योर हैंड्स एंड लेग्स. पूरा शरीर को हिलाएं. कीप अ स्माइल ऑन योर फेस. मुस्कान रखिए और विश्राम करिए. रिलैक्स. Let's begin with the head movements. Slowly turn your head left and right. धीरे धीरे सिर को दाएं बाएं घुमाएं. Do as much as you can. And come back to the center. Now interlock your fingers. हाथ को जोड़िए and move your hands up and down. हाथ को ऊपर नीचे करिए. Keep a smile on your face. Now bring your hands up and gently move your elbows to the left and right. Let your elbows touch the floor and pull the arms to the sides. कोहनी को बेड के ऊपर रखिए और हाथ को दाएं बाएं कीजिए. And come back to the center. Now place your elbows down. Now let your right hand go down and left hand go up or rotate up. Now slowly start rotating your hand up and down. हाथ को ऊपर नीचे घुमाइए. रोटेट करिए कंधों से, from your shoulders. This practice that we are going to do today is also going to help you to detox the whole body. And come back to the center. Now keep your hands to the sides. Now take the hands up and bring them sideways. Up, down. हाथ को ऊपर नीचे करिए. Now as you do this, move your head. Take your hands down. करते करते हाथ को नीचे लेके जाएं. And take them to the top. Side. And relax. Now stretch your right hand to the left side and left hand to the right side. दाएं हाथ को बाएं तरफ लेके जाएं, बाएं हाथ को दाएं तरफ. And come back to the center. Now bring both your forearms together, elbows up. Now inhale, open your arms to the sides. Exhale, bring your hands closer. श्वास लेते लेते दोनों हाथ को साइड में लेके जाएं, कोहनी को, और आगे सामने लेके आएं. Do it at your own pace. अपना ही स्पीड पे करिए. And relax. Now if you wish to, you may remove the pillow. Bend both your knees. We'll do the Setubandhasan lifts. Breathe in. Lift your hips up. सांस लेते लेते कमर को ऊपर करिए और नीचे. Exhale down. Up. Down. Up. Down. Up. Down. 2 more times.
and relax. Now stretch your hands to the sides. Right foot on the left knee. Pull your right knee to the left. Look to your right side. नटराज आसन. दाएं घुटनों को बाएं तरफ नीचे कीजिए. And to the other side. One more time. एक और बार. Keep twisting. And slowly come back to the center. Now pull your right thigh to your right chest. Exhale. Now the other leg. Pavan Muktasana. Right leg and left leg. दाएं जंघा को अंदर खींचिए और बाएं जंघा. One more time. And relax. Now interlock your fingers. Place your palms behind your head. हाथ को सिर के पीछे रखिए. Now gently move your upper body to the right side. शरीर की ऊपर की बाह को दाहिने तरफ लेके आए. Now put your left leg over the right and move your right leg and the left leg, both the legs to the right side. Giving your body a nice side bend. Do as much as you can. जितना हो सकते उतना करिए. Now bring the legs back to the center. Bring the body back to the center. Take the body to the left side. Now change the legs. दूसरा तरफ पैर को दूर दूर लेके जाए. Take your legs far away to the left side. And come back to the center. Now bend both your knees. Once again stretch your hands to the sides. Now put your right foot on the left knee and gently drop the legs to the left and right. Dakshina Murti Asana. दाएं पाँव को बाएं घुटनों के ऊपर रख के और पैर को दाएं बाएं लेके जाएं. If you wish to, you may also turn your head left and right. Come back to the center. Now change the leg. दूसरा तरफ. And come back to the center. Once again, right leg over the left. Now with your right hand, gently push your right knee in and out to open the hip joint. दाएं हाथ से दाएं घुटनों को अंदर बाहर दबाएं. Now change the leg. These are all very simple and effective exercises for the whole body. पूरा शरीर के लिए ये सब बहुत अच्छा है और सरल भी है. And come back to the center. Now straighten the knee and bend the knee. घुटनों को मोड़िए और पैर को सीधा करिए. Now let's do this with both the legs. दोनों पैर से करते हैं. Good for your core strength, lower back strength. And relax. Now bring the soles of the feet together. दोनों पाँव को नमस्ते में रखिए और घुटनों को अंदर बाहर करिए. Move your knees in and out.
Now keep the feet together. पाँव को साथ साथ रखिए. अगर हो सकता है तो यहाँ से कमर को ऊपर उठाएं, थोड़ा रुकिए और नीचे आ जाए. If possible, breathe in, lift your hips up and bring it down. Breathe out. Let's do this 3 more times. 3 और बार करेंगे. And let's straighten the legs out. Now bring your hands next to the body. Now breathe in, pull your feet in and pull your palms in. श्वास लेते लेते पाँव और हथेली दोनों को अंदर खींचिए. Breathe out, stretch forward. श्वास छोड़िए आगे. श्वास अंदर, बाहर, अंदर, बाहर. In, out. Continue. Now slowly start rotating both your palms and both your feet in clockwise direction. दोनों पाँव और हथेली को गोल गोल घुमाएं और रिवर्स. And relax. Now as you breathe in, expand your tummy. Continue breathing in, expand your chest. Let the whole body expand. And breathe out. Relax your tummy, pull the navel in. श्वास लेते लेते पूरा शरीर को फैलाएं. पेट, छाती, expand the whole body. Breathe out, relax, pull the navel in. नाभि का अंदर खींचिए, श्वास छोड़िए. Yogic breathing. One more time. एक और बार. And breathe out. You may continue to rest in Shavasana for a couple of minutes, or you may also do a meditation with Gurudev Shri Ravi Shankar ji, for which I have given the link below in the description. आराम से आप 2 मिनट लेट सकते हैं या ध्यान भी करना चाहते हैं गुरुदेव के साथ, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है. And you may also join my daily Shish Yoga classes that I conduct on YouTube, where I systematically teach asanas and exercises and breathing technique meditation for different parts of the body and different health conditions also. आप मेरे साथ डेली शिश योगा क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं. I've given the link for that also below in the description. All right, and leave a comment and let me know how you felt, and do share this video with your friends and family, and leave a like and subscribe to this channel. Namaste.